Guys, start with this DPP test for solution based on quantitative ability. It was on profit and loss. तो मेरा आज का जो शेड्यूल था वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ. 4 PM हमने LR टेस्ट शुरू किया था स्पेशल क्लास में, and at 5 PM we started the solution video of it. 6 PM we started the test of quantitative ability based on profit and loss. And at 7 PM we had started the solution video. Okay, अभी ये जो हमारा solution video चल रहा है, तो ये हमारा solution video है टेस्ट के लिए, जो हमने स्पेशल क्लास में 6 बजे कंडक्ट किया था. I'll be teaching you for CAT and IPMAT. I have trained thousands of students offline and online for the exams, that is CAT and IPMAT. And the topics that I'll be covering is QA, LR, and data interpretation. So these are the topics that I'll be teaching. Now let me quickly tell you what are the benefits if you join Iconic बैच. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, देर आर मेनी बेनिफिट्स गाइज. देखो, आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कोई एक पर्सनल मेंटर अगर होगा जो आपको हर स्टेप पे गाइड करेगा, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, आपके एग्ज़ाम लिखने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स कब पढ़ने हैं, आपको टेस्ट कब देना है, आपको बैचेस कब देखने हैं, तो हर चीज़ में आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल बी द बेस्ट फॉर यू. और इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए मैं अभी और आगे चीज़ें बताऊंगा. देर आर न्यू बैचेस विच रिसेंटली स्टार्टेड और आगे भी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं. तो अगर आप इन बैचेस को और मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, यूज माई कोड SKY10 एंड डू नॉट फॉरगेट टू गेट द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ऑलराइट, और मैं बस तुरंत शुरू करने वाला हूँ टेस्ट का सोल्यूशन. हेलो उर्वी, वेलकम टू द सेशन. And for all the CAT students, let me quickly tell you, 6-month plus batch you will get in 16,400 rupees. तो SKY10 आप यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो आपको प्लस प्लान के सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे. अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव पर्सनल मेंटर एज आई मेंशन्ड अर्लियर. Okay, and yes, Urvi, all the students who are preparing for specifically CAT, if I'm talking about, तो आपको 17th October, that is starting yesterday, कल एक मॉक टेस्ट आया था. आप इस मॉक टेस्ट को फ्री दे सकते हो. 24, 31 एंड 7 नवंबर ऐसे आपके पास टोटल 4 फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होने वाले हैं. इसको ज़रूर दीजिएगा और आपको मेरा कोड यूज़ करना है SKY10. ओके, तो इस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हो फ्री में. तो जैसे मैंने बताया, मेरा कोड है SKY10 एंड द आस्क डाउट फीचर विच इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर फ्री. आप कोई भी क्वेश्चन का फोटो लेके अपलोड कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिवर्ट सोल्यूशन ऑफ इट. ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस सोल्यूशन वीडियो. हमने 6 बजे इसका सोल्यूशन टेस्ट स्टार्ट किया था. उर्वी, आई थिंक कि आप टेस्ट के लिए आपने ज्वाइन नहीं किया है ना अभी तक, तो आप टेस्ट को भी ज्वाइन किया कीजिए. मेरा शेड्यूल मैं और यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ. 4 PM वी स्टार्ट LR टेस्ट विच इज ऑन स्पेशल क्लास, इट इज फ्री. एंड 5 PM वी स्टार्ट द सोल्यूशन वीडियो ऑफ इट, जो ये फिर से स्पेशल ये यूट्यूब पे होगा. 5 PM जो सोल्यूशन वीडियो LR टेस्ट का आएगा वो यूट्यूब पे होगा. 6 PM we will start the quants test, quantitative ability test होगा. और 7 PM फाइनली जो हमारा ये करंट सेशन चल रहा है, ये क्वांट्स टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो है. तो सारे लिंक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको एक बस चीज़ करनी है. मेरा नाम आपको सेशन के टाइटल में दिख जाएगा. सो माय नेम इज़ आकाश पाहुरकर. उस नाम से सर्च कीजिए आप टेलीग्राम पे, मुझे वहाँ पे DM कीजिए एंड आई विल शेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट लिंक्स. टेलीग्राम ग्रुप लिंक जहाँ पे मैं सारे लिंक्स अपलोड करता हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको. जहाँ टाइनी URL लिंक जिसमें मेरे प्रीवियस सेशंस के लिंक आपको अवेलेबल होंगे. सो जस्ट मैसेज मी ओवर देयर, आई विल हेल्प यू आउट विथ योर प्रिपरेशन एंड योर स्ट्रैटेजी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन गाइज. Alfred buys an old scooter for 4,700 and spends rupees 800 on its repairs. अब उर्वी, मुझे एक बात बताइए कि अगर उसने 800 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा किया उसके रिपेयर करने के लिए, तो वो तो ऑफ कोर्स है ना कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा. तो मेरा जो स्कूटर है उसका कॉस्ट प्राइस अभी सिर्फ 4,700 रुपीज नहीं है. कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे लिए, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इट विल बी 4,700 प्लस 800. ऑलराइट,
तो ये हो जाएगा दैट इज 5500। ये कॉस्ट प्राइस हो चुका है। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया। और जैसे ये कॉस्ट प्राइस हो गया, हमें सेलिंग प्राइस ऑलरेडी पता है, राइट? सेलिंग प्राइस तो हमें बच्चों ऑलरेडी पता है, दैट इज 5800। तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? जल्दी से गाइस, एवरीबॉडी क्विकली टेल मी, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट का हुआ? ये बताना बहुत ही इजी हो गया अभी, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है, हमें सेलिंग प्राइस भी पता है। तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो और कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये भी निकाल सकते हो। सो प्रॉफिट परसेंटेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। SP इज गिवन एज 5800 माइनस 5500 upon 5500 into 100. So if you calculate this, you will get the profit percentage as it will be 5 and 5 by 11%. So this will be my profit percent for this question. Option B is the right answer. I hope किसी को भी कोई डाउट नहीं है। और एक चीज याद रखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको वो फॉलो करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में उन इक्वेशंस का काफी यूज होता है और वो इक्वेशंस तो यूज होंगे ही, उसके साथ साथ अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे यूज करना है वो आता है, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे टॉपिक्स में आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो मेरे सारे प्रीवियस सेशंस, आप परसेंटेज का सेशन भी देख लो। एक पर्सनल प्रॉब्लम है, कैन यू गिव टिप? श्योर मोहित, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको, बताइए जल्दी से। टेल मी मोहित, आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप? आई विल हेल्प यू आउट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल फॉर मी। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन गाइस। ओके, तो मैंने जैसे देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं बताना चाह रहा था, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, कभी भी अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इंक्लूडेड है, तो इस केस में हमें कौन सा इक्वेशन हमेशा यूज करना होगा? वो होता है SP इज इक्वल टू फैक्टर इंटू CP। ओके, वो जो फैक्टर है वो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। बैड अफेक्शन हो रहा है, एडिक्शंस हो रहा है। ऑल राइट। सो आई थिंक मुझसे बेहतर मुझे एक लगता है कि आपने एक कोटा फैक्ट्री करके सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे है, यूट्यूब पे भी है, तो आई थिंक आपने वो देखना चाहिए। कोटा फैक्ट्री इज अ सीरीज, और वो सीरीज देखोगे जिसमें जीतू भैया बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को, तो वो आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। ओके, तो बाकी तो आप समझदार हो, ओके, आप ग्रोन अप हो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? सो जस्ट वॉच। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। हर चीज़ का वक्त होता है, और परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ें करोगे तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट? तो जो पर्सन एक टाइम फिक्स नहीं कर पाता किस चीज़ का, तो वो फिर थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है। तो आपको ये चीज़ याद रखिए, हर चीज़ करने का टाइम है। ओके, तो आपको किसी को पबजी खेलने का ये रहता है, बहुत एडिक्शन रहता है, राइट? कोई रात भर नेटफ्लिक्स सीरीज देखते रहेगा। तो ये चीज़ें कब है? जब आपके पास टाइम है ना, टाइम स्पेंड करने के लिए है। लेकिन राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। कोई IPMAT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई CAT के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो ऐसे टफ एग्जाम्स के लिए जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ देने पड़ेंगे। ओके, और डिस्ट्रैक्शन छोड़ना भी इतना इजी नहीं है। लेकिन आपको एक मैं चीज बताऊं, देखो, किसी चीज से अगर आप चाहोगे कि आपका दिमाग हट जाए, तो वो इतना इजी पॉसिबल नहीं है। बट वॉट यू कैन डू इज ट्राई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। जब आप दूसरी चीजों पे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, आपके प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना शुरू करोगे, तो अपने आप डिस्ट्रैक्शन से आपका ध्यान हटते जाता है। ओके, तो आप ये मत सोचना कि मैं बैठे रहूंगा और मेरे डिस्ट्रैक्शंस हट जाने चाहिए, ऐसा नहीं पॉसिबल। सो ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स यू वांट इन लाइफ, थिंग्स यू चेरिश इन लाइफ, थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू यू। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, सो ये मैंने एक इक्वेशन आपको बताया, और डिस्काउंट
परसेंटेज अगर है तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आपको SP इज इक्वल टू फैक्टर इनटू MP, ये इक्वेशन हमेशा यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो। और आपको इफ़ यू रियली वांट टू फॉल इन लव विथ नंबर्स, मैथ्स अगर आपको आप चाहते हो कि आपको अच्छा लगे, तो मैं एक छोटा सा कोट मैंने कहीं पे सुना था, वो आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, उस चीज़ को आप समझिए। आज फिर से एडफेक्शन, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो पॉलिटिक्स, पोएट्री एंड प्रोमिसेस, politics, poetry and promises, these are lies, these are lies। ये जो मैं लाइंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन लाइंस का अगर आप डीप मीनिंग जो है वो अगर समझोगे, यू विल फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, बीट डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो पॉलिटिक्स, पोएट्री एंड प्रोमिसेस, दीज आर लाइज, बट एक मिनट, हम बट नंबर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बट नंबर्स आर एज क्लोज एज वी गेट टू द हैंड राइटिंग ऑफ गॉड। ओके, सो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड मुझे बहुत ही प्यारी 2-3 लाइंस मैंने कहीं पे एक सीरीज में या कहीं तो मूवी में मैंने सुने। सो पॉलिटिक्स, पोइट्री एंड प्रोमिसेस, दीज आर लाइज, बट नंबर्स आर एज क्लोज एज वी गेट टू द हैंड राइटिंग ऑफ गॉड। सो देखो, आप बस ट्राई टू फोकस, भले ही कभी कभी आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, कॉन्ट्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो यू हैव टू गिव सम टाइम टू इट। जैसे जैसे आपका उस पर फोकस बढ़ते जाएगा, वो फिर एक्सपोनेंशियली आपका इंप्रूवमेंट होता है, एक्सपोनेंशियली आपका इंटरेस्ट आने लगता है। इफ यू चेरिश समथिंग, इट विल गिव यू रिजल्ट्स बैक। ओके, तो ये जरूर याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एंड रिमेंबर दिस लाइंस। ऐसे में कई सारे लाइंस आपको बताते रहूंगा बीच बीच में, एंड आई नो स्टूडेंट्स नीड मोटिवेशन, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप जब तक आपके गोल्स सेट नहीं करोगे डेली, डे टू डे लाइफ में, तब तक वो डिस्ट्रैक्शंस होते ही रहेंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज के दिन मुझे इतना इतना पढ़ना है और वो मैं पढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो जब तक आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स आप सेट नहीं करोगे तो डिस्ट्रैक्शंस होंगे। आपके दिमाग में अगर सुबह आप उठे, आपने कोई गोल सिलेक्ट ही नहीं किया कि हाँ आज मुझे दिन भर इतना पढ़ना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतने ये मॉक टेस्ट लिखना है, सेक्शनल टेस्ट लिखना है, आकाश सर के लेक्चर देखने हैं, प्लस बैचेस देखने हैं, ऐसे गोल सेट नहीं करोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होनी ही है। सो ट्राई टू हैव गोल्स एंड ट्राई टू अचीव दोज गोल्स डेली, ऑन द डेली बेसिस। तो वो जो आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो, दोज आर कॉल्ड एज स्मॉल विंस। तो ऐसे स्मॉल विंस का जब आप बहुत बड़ा कलेक्शन करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आई बिलीव यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं गाइस, एंड एवरीबॉडी क्विकली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। Follow me on Unacademy Learning App. My name is Akash Pahurkar. You will find my name in the title, okay, title of this session. So follow me there, and on Telegram also you can search me by this name, that is Akash Pahurkar, and DM me there. All right, I'll share all the important links, my Telegram group link and tiny URL link. Sir, you are from CBSE board. Mysterious fragrance. Actually till my 10th standard I was from CBSE board. Yes, very good Mohit, and I'm proud of you that you are addressing your doubt or addressing your problem, and I'll always help you out. I'm always there for you. So CBSE board जो था वो मैं 10th स्टैंडर्ड तक था, उसके बाद में 2 साल के लिए मेरा स्टेट बोर्ड था। ऑलराइट, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। तो उन्होंने क्या बोला कि 20 आर्टिकल्स इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। तो एक्स SP इज इक्वल टू 20 CP, ये उन्होंने बोल रखा है।
और प्रॉफिट और लॉस अगर आपको चाहिए तो हमेशा पूरा का पूरा फैक्टर आपको सीपी के साथ में रखना पड़ेगा। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि ये जो x होगा ये आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इट कम्स आउट टू बी SP इज इक्वल टू 20 अपॉन x इंटू CP। ओके, तो ये एक इक्वेशन याद रखिए। मान लो कि दिस इज इक्वेशन 1 and it is given that if the profit is 25%, can you tell me if I want the profit to be 25%, what should be the multiplication factor in this equation? जो equation मैंने आपको बताया था that is SP is equal to factor into CP, इस इक्वेशन में अगर 25% का प्रॉफिट है तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए 1.25। दिस शुड बी द फैक्टर। सो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, SP इज इक्वल टू 1.25 इंटू CP। करेक्ट। सो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर लेते हैं। करेक्ट। सो जस्ट इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। So 20 by x is equal to 1.25 and 1.25 can also be written as 5 by 4. Urvi, 1 by 4 you have mentioned it correctly, very good, excellent, but 1 by 4 is the multiplication factor for just 25%, but the factor for 25% profit is 1.25 or you can say 5 by 4. All right. So from here the value of x comes out to be what? It will be 4 5s are 20 and 5 5s are, sorry, just a second, I'll just have to change it a little bit. So 5 से ये cancel 4 4s are 16. So the value of x comes out to be 16 for this question. Option B is the right answer. I hope all of you have understood this part. So let's start with this next question, guys. And everybody give me thumbs up in the chat box and hit the like button for sure. Now this is a really good question, classic question, and all these questions, the questions which we are discussing right now, these are the solution of the test which I started at 6 PM in special class. Okay, so it was a live test for the students based on profit and loss. All right, so चलो इसको solve करते हैं। First of all, let's consider cost price to be crystal clear. Very good, Urvi, proud of you. So cost price, let's consider it to be 100 rupees. And if I want double the profit, triples, find the profit percentage. If the selling price is doubled and profit triples. Okay, let's consider profit is the tripled profit. Triple profit is 300 rupees. I have considered that the triple profit is 300 rupees. Now, and this triple profit, in this case, what will be the selling price? In this case, the selling price comes out to be 400. Okay, but this was the selling price which was doubled. So the original selling price should be selling price original. What should be the original selling price? It should be 200 because 400 was the doubled selling price. All right, so SP original is 200, and when the cost price is 100 and the selling price is 200, in that case the profit percentage is straightforward right away 100%. Cost price was 100, selling price was 200, so you have sold it in the double price, right? It means that you have 100% profit in this question. So the answer comes out to be 100%. And it's a suggestion, you can say it's a suggestion or it's a request from my side for all my students who are preparing for be it IPMAT, be it CAT or IPMAT 22, 23, CAT 21, 22, 23. For all the students, it will be beneficial for you to join Unacademy Plus subscription. Use my code SKY10 so that you can watch all the structured plus batches, and you can write mock test, you can write sectional test. It will be beneficial for you so that you can have an edge over thousands of other students who are not preparing right now. And there are
thousands of students who have already joined these batches. So if you want to compete with them, so join it as soon as possible. It's not too late. It's okay. So join it quickly. So let's start with this next question now. In a certain store, the profit is 320% of the cost. If the cost increases by 25%, but the selling price remains constant, approximately what percentage of selling price is profit? Okay, first of all, I want you guys to read the question and digest the question. Try to understand what is written. Then I'll explain. First of all, we'll go by assuming that cost price is 100 rupees. Cost price is 100 rupees. Since the profit percentage is given as 320%, it clearly means that profit in rupees is 320 rupees, isn't it? So the selling price, from here I can say selling price is 420 rupees. Now what they have said, the cost price increases by 25%. So if this was CP1, the CP2, the new cost price comes out to be 125 rupees. All right. So in this case, what can be the profit in rupees? What will be my profit? It will be 420 minus 125, isn't it? So the profit amount should be how much? Quickly tell me. It should be, 320 minus 25. It will be 295, correct? 295 will be the profit amount in rupees, and I just need to find the percentage of 295 out of 420. This is the question. Many students will make a huge mistake in this question, that they'll try to find the percentage on cost price, but it's not on cost price, it's on selling price. So remember that. So 295 upon 420 into 100. This is the question. So what should be the answer? Quickly tell me, guys. Everybody try to calculate this. So the answer comes out to be, just a second. Yeah, so answer approximately comes out to be 70%. So this is approximately 70%. This is the correct answer, guys. Okay, so option B is the right answer. I believe you understood this part, and even if you have minute queries, minute doubts, I want you guys to raise your question, voice your question, and I'll explain. I'm happy to explain a particular question twice, thrice, unless and until you understand it. Okay, so चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस. एंड मेरा शेड्यूल सब लोगों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा. टिल फ्राइडे, अभी कल से भी हमारा सेशन है. एंड यस, वन मोर थिंग गाइस, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लेट मी क्विकली टेल यू, एट 9 PM टुडे, जैसे हमारा सेशन ये खत्म होगा, 9 बजे हमारा प्लस बैच है कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए. 9 PM टू 11 PM 2 घंटे का प्लस बैच है. ओके, एंड इट इज़ फॉर कैट स्टूडेंट्स. तो अभी तक अगर आपने सब अनअकैडमी प्लस बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है, दैट इज KAI10. यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट. सो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम टू लेट यू ज्वाइन द बैचेस, so that you can give your 100% focus on your preparation and you will not have any distractions. All right, so chalo next question करते हैं. A vendor bought toffees at 6 rupees, 6 for a rupee. Okay, a vendor bought toffees at 6 for a rupee. How many for a rupee must he sell to gain 20%? Okay, now many students might get confused कि exactly question क्या लिखा हुआ है, they won't understand. But let me quickly tell you. First of all, cost price for 6 toffees, cost price for 6 toffees is 1 rupee. Then what will be the cost price for 1 toffee? Can you quickly tell me in the chat box, guys? So Mysterious, Fragrance, Urvi, Mohit, can you please tell me in the chat box? Cost price for 6 toffees is 1 rupee. Then what should be the cost price of 1 toffee? Quickly tell me, everybody, fast. I'm waiting for you.
What should be the answer? Tell me, guys. No, 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 no. Mysterious fragrance. Cost price for 6 toffees is 1 rupee. Then cost price for 1 toffee will be, it will be 1 by 6, isn't it? 1 by 6 rupees. Now, and we want 20% profit. Now, let's talk about, just a second. Dekho. Now, what we need to do understand is SP is equal to factor into CP. This is the equation that we are supposed to use. All right. Now, we know that the profit percentage is 20%. 1 by 6, Urvi and mysterious fragrance, very good. 1 by 6 is the correct answer. I hope it's crystal clear in your mind now. So, since we want profit to be 20%, we'll write here 6 by 5, because 20% profit. For 20% profit, the multiplication factor you can use is, either you can use 1.2 or you can use 6 by 5. Okay, out of both of them you will have to use one of them. So what I feel comfortable with in this question is 6 by 5, and cost price is already given, that is 1 by 6, so 6 gets cancelled, and the selling price for one toffee is 1 by 5 rupees. Then selling price for 5 toffees would be what? SP of 5 toffees, it will be 1 rupee. Okay, so it gives you an idea that in 1 rupee you'll have to sell 5 toffees in order to get 20% profit. I believe you understood this part and there is no doubt over here. So option C is the right answer. A very simple question. Everybody hit the like button, give me thumbs up in the chat box, and it's a request to all of you. Okay, all the students, you might be having WhatsApp groups of your college friends or your childhood friends, or family, cousins must be there, and anybody in your contact who is preparing for IPMAT, that is BB entrance exams, or CAT and other MBA entrance exams. Ask them to join my sessions, ask them to follow me on Unacademy Learning app, and let them know about our sessions so that they can get a benefit from these things. All right, and I want to reach out to as many students as possible. That's my dream, to help thousands of students. Previously I have done it, I have achieved it. There are thousands of students whom I have helped, and I want to achieve more students. I want to reach out to more students through this online platform which have been given to me by Unacademy, and I am grateful for that. But just I want you guys to help me out for that. Okay, just try to spread this sessions as much as possible, and do not forget my my schedule also. At 4 p.m. we start the test on special class, LR test. At 5 p.m. we start the LR test solution on YouTube. At 6 p.m. we start quantitative ability test on special class, and at 7 p.m. we have started this solution video. All right, so this is my schedule, and ask your friends to join my Telegram group as well. If you want to join my Telegram group, first of all, do one thing. My name is given in the this title, okay, session title. Just check it out. My name is Akash Pahurkar. Search me by the name Akash Pahurkar on Telegram and just DM me over there. I'll share the Telegram group link and other important links over there with you guys. Okay, and because I'm going to help you crack IPMAT Indore, IPMAT Rohtak, all the BB entrance exams. Along with that, if you are preparing for CAT, SNAP, CT, NMAT, IFT test, okay, all these MBA entrance exams, I'll be helping you to crack all those exams. And the topics will be quantitative ability, logical reasoning, and data interpretation. These are the topics which I teach. All right, so let's quickly move further for the next question now. See, the percentage profit earned by selling an article for 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 1280. Okay, first of all, I know that on cost price, if there is X rupees profit, then the selling price is 1920.
On cost price, if there is X rupees loss, then the selling price is 1280. So from these two equations, what you can do is just add them. Okay, so CP, it will be twice CP. X and X gets cancelled. So this comes out to be how much? It will be 2000 and 3000. Just a second. 900, 200. Yes, so 3200, isn't it? 3200. So from here the cost price I get is 1600 rupees. This will be my cost price. And once you have access to cost price, it is very clear, it is very simple to find out the selling price for 25% profit. Can any one of you quickly tell me, if cost price is 1600 and your profit is 25%, what should be my selling price? It's way too simple. Okay, I expect your answers to be there in the chat box as soon as possible. And first of all, hit the like button guys and give me a thumbs up. And let me tell you, for all my CAT students, at 9 p.m. I have a plus batch today. Okay, I'll be teaching you arithmetic over there. तो प्लस बैच आपको 9 PM ज्वाइन करना है मुझे. अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस बैचेस मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आई विल सजेस्ट यू टू यूज माय कोड SKY10 एंड ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आपका एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी शुरू होना चाहिए आपका कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है. हेलो सिकंदर, वेलकम टू द सेशन, वेलकम. नाउ for 25% profit, what we need to do is just add 1/4 of it here. So the 2000 rupees is my selling price for 25% profit. So this is my correct answer. I believe all of you understood this part. So option A is the right answer. Is that clear guys? Everybody hit the like button, give me thumbs up. Okay, so and for all those students who are watching, hello, good evening beta. For all the students who are watching my session right now, let me tell you, my schedule is from 4 p.m. to 8 p.m. Which is absolutely free of cost, right? At 4 p.m. I start daily, okay, from Monday to Friday. At 4 p.m. I start a special class LR test. Okay, it is a live test for all my students. It's for free. It is live test in the form of polls. At 5 p.m. on YouTube I start LR test solutions. जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया उसका 5 p.m. solution वीडियो भी आपको मिल जाएगा. At 6 p.m. my schedule is special class Quantitative Ability Test, okay, which is a live test again. And at 7 p.m. we start on YouTube, which is Quantitative Ability Test Solutions. That is the current session which we are learning. I'm explaining these questions. These questions are from the live test which I conducted in special class at 6 p.m. today. So I want you guys to give the test as well. Okay, so chalo, let's move further for the next question. Okay, a shopkeeper expects a gain of 22.5% on his cost price. If in a week his sale was rupees 392, what was his profit? Okay, let's try to understand one thing. It is clear that 22.5% is his is his profit percentage. First and third will be on Academy and second and fourth will be on YouTube. Am I correct? Secondar, exactly. First and third, that is 4 p.m. and 6 p.m. sessions. These are two tests, live tests for my students. Those will be on special class Unacademy Learning App, and 5 p.m. and 7 p.m. sessions will be on YouTube, which are the solution videos of those respective tests which I conduct. Okay, so in this question, I know that if there is 22.5% profit, so we have to add 100% plus 22.5%, and this comes out to be total 122.5%, isn't it? And this value is given as 392.
Okay, this value is given as 392. Now I just need to use my cross multiplication technique. So if I know that 122.5% is equal to 392, then 22.5% will be equal to how much? Can you find the value of x over here using cross multiplication? Everybody quickly tell me, guys. Quickly guys, tell me. Just a second, just a second. Okay, chalo. So let's move to the next question, guys. Will follow you every day from now. Sikindar, that's great. Very good, very good. So that's what I want. And it's a request to all my students to follow the schedule, and I'll help you crack all the important exams, whichever exam you're preparing for, be it any MBA exam or any BBA entrance exams, right? So just I expect one thing from you, that share these session links with as many friends as possible. All those students who are not in my Telegram channel, so first of all what you need to do is text me on Telegram, okay, on Akash Pahurkar. Search by name Akash Pahurkar. You will find my name in the title of the session. Okay, by that name search me on Telegram, message me over there. I'll share all the important links, okay, which is Telegram group link and tiny URL link where you can find all my previous sessions as well. So I'm going to help you out. Spread the Telegram group links and this session links with as many friends as possible. That will be great, guys. So next question now. A man buys a cycle for 1400 rupees and sells it at a loss of 15%. Okay, what is the selling price? Now this question is extremely simple. Extremely simple question, just straightforward question, right? What you need to understand is, for this question you can solve it in two ways. What are those two ways? First way is SP is equal to factor into CP. This is the first way which you can use to solve this question. And everybody, first of all, hit the like button, guys, and give me thumbs up in the chat box. Now SP is given as we know that there is 15% loss, and for 15% loss the multiplication factor should be 0.85 into 1400, which is CP. Now many students might wonder coefficient method exactly. Now many students might wonder why 0.85 I have taken over there. I'll quickly explain that part. Out of 100%, if my loss is 15%, then I am left with 85%. And for 85%, the factor comes out to be 85 by 100, that is 0.85. And this is the reason why I have used this 0.85. I believe, yes, Arpit, I hope everything is crystal clear in your mind. This is what I want from you, that each and every concept, each and every question will be crystal clear in your mind when I explain it to you. So what will be the selling price over here? Quickly tell me, guys. Everybody fast. You can write it as 85 by 100 as well into 1400. What you can do, 0 0 0 0 cancelled, and just 85 multiplied by 14. Okay, so SP is equal to here, that is 800, 850. Crystal clear, everything is crystal clear. Very good. I'm going to explain another method as well. Okay, so just wait a second, wait a minute. I'm going to use another method as well, because while solving arithmetic questions, it is very important that you know many alternate methods, okay, so that you can solve the questions faster also. So just a second. Here you will have 1190. Very good. Very good, Urvi. I'm proud of you. Amazing. So SP is equal to 1190. Now there is another method. What you can do is, we know that 1400 is 100%,
And since you want to have 15% loss, first of all subtract 10% from this. Okay, subtract 10%, and 10% of 140 1400 is 140, and you will have 1260 over here. So you are left with 90%, but I want to subtract more 5%, that is you'll have 85% left. Now 5%, if 140 is 10%, then 5% will be half of it, which is 70. So the answer comes out to be 1190. So this can be one of the alternate methods. Use multiple methods, exactly. That's I hope all of you understood this part. And daily आपको इसी टाइम पे मुझे ज्वाइन करना है ताकि आप सब कुछ समझ पाओ, and I'll be able to help you out with many topics. And this schedule is going to be there till Friday. ओके, फ्राइडे तक आपको मेरे सारे सेशंस 4 PM से लेके 8 PM तक आपको देखना है. एंड फॉर ऑल माय कैट स्टूडेंट्स, we have a plus batch as well at 9 PM today. From today to Friday we have daily 9 to 11 PM plus batch. If you haven't joined the plus subscription, plus batches and mock test series, join it using my code SKY10. That will be very, very beneficial for all my students. So 1190 is the answer. Option C is the correct answer. So question number 9 over here. Chalo. Sam purchased 20 dozens of toys at the rate of 375 per dozen. He sold each of them at the rate of rupees 33. What was his percentage profit? It's a very simple question. What you need to just do is, in one dozen I know that there are 12 toys, and 12 toys I have purchased in 375 rupees. Then for one toy the cost price will be 375 upon 12. So 3 4s are 12, 3 1s are 3, and 3 2s are 6, and 3 5s are. So the cost price of one toy is given as 125 by 4. Okay, so and it is given that one toy is sold at 33 rupees. So what you need to do is use the equation which I have told you thousands of times. That is SP is equal to factor into CP. SP is already given, which is 33, and the multiplication factor I don't know, and the cost price is 125 by 4. From here, what should be the factor? Can you tell me? The factor is 33 into 4 by 125. Can you quickly tell me what will be the value of factor over here? So Mysterious Fragrance, Urvi, Sikandar, Arpit, can you please tell me what will be the multiplication factor for this question? Everybody fast. What should be the multiplication factor, everyone? Just a second. Very good, exactly, Sikandar. So the factor comes out to be 1.056, and when the multiplication factor is 1.056, always remember the percentage profit will be 5.6%. Very, very simple. Okay, and if you have, guys, any doubt, any minute doubt, I want you guys to give voice to your questions so that I can help you out and we can solve all the important questions, right? So the next question is, some articles were bought at 6 articles for 5 rupees and sold at 5 for 6. Okay, what is the profit percentage? In such type of questions, what you need to understand is, remember, listen to me very extremely carefully how I'm going to solve such question. While purchasing, I bought 6 articles. Okay, 6 articles for 5 rupees, and while selling I purchased 5 articles. What you need to do is assume that number
of articles, एक मिनट, number of articles is equal to LCM of 6 and 5. What is the LCM of 6 and 5? The LCM comes out to be 30. So let's consider there are 30 articles, correct? Now since there are 30 articles and 6 articles, देखो, while purchasing, okay, while purchasing I had purchased 6 articles for 5 rupees. Then for 30 articles the cost price will be what? 6 5s are 30, so 5 5s are 25 rupees, right? So 25 rupees is the cost price for 30 articles. But while selling, what happened? Remember guys, listen to me carefully. While selling, I sold 5 articles for 6 rupees and I need to get 30 articles, selling price of 30 articles, right? So 5 6 are 30, so 6 is 36 rupees. Now from here it is very clear that 25 rupees is the cost price and 36 is the selling price, right? So the profit percentage will be, profit percentage I'll calculate over here. So SP is equal to factor into CP. All right, so SP is 36 and factor I don't know, and 25 rupees is the cost price. From here the factor comes out to be, can you quickly tell me what should be the value of factor over here? Everyone fast calculate this. It will be 1.44. Sikinder beta, very good. Mysterious fragrance, can you please tell me exactly what is your doubt? And since 1.44 is the multiplication factor, it means that our profit percentage is 44%. I believe you understood this part. Everybody quickly give me thumbs up in the chat box, hit the like button. If you have any doubt, please tell me right now. I hope you have understood this part, okay? And one more thing, I want you guys to tell you what is my schedule, what are the things you need to remember. 4 p.m. daily we start on special class, which is LR test, LR live test for all my students, which is free, which happens in the format of polls. At 5 p.m. we start on YouTube, that is LR test solutions, and at 6 p.m. on special class we conduct quantitative ability test, and at 7 p.m. we have on YouTube, that is quantitative ability test solution. That is this current session which we are doing, it is a solution video for the test which I conducted on special class. So if any one of you, if you didn't already follow me on Unacademy learning app, follow me. My name is Akash Pahurkar. My name is Akash Pahurkar and I want you guys to follow me on Unacademy Learning app and search me by this name, that is Akash Pahurkar. Search me by this name on Telegram as well and DM me over there. I'll share all the group links, important links with you guys, so that you can start your preparation in a structured manner. So that's it for today, and for all my CAT students, at 9 p.m. today we are starting a plus batch as well, so be there at 9 p.m. I'll share the important links in the Telegram group. So thank you so much guys, bye bye, take care, have a great day. I'm going to end this session. Thank you so much guys. Urvi, mysterious fragrance, and Sikinder, thank you so much. Om Sai, bye bye, take care, have a great day, and let's meet